Welcome to MBA Karo. So today we are going to solve NMAT official mock. ठीक है, तो अगर आपने NMAT के लिए रजिस्टर किया है तो अगर आप अपने डैशबोर्ड पे जाओगे, यहाँ पे NMAT बाय GMAT ऑफिशियल प्रैक्टिस एग्जाम 1 आता है जो फ्री होता है। ठीक है, और बाकी दो एग्जाम्स और होते हैं 2 एंड 3, जिनके लिए आपको पे करना पड़ता है, विच इज समवेयर अराउंड 1100 प्लस GST। सो कुछ 1300 के अराउंड आपको दो मॉक्स मिलते हैं। ठीक है, एंड आई मीन दैट्स क्वाइट एक्सपेंसिव जस्ट फॉर टू मॉक्स. And if you are looking for mocks, we have NMAT pattern mocks. So we are providing 15 mocks for 1500. So if you're, and these mocks will not have any solution also. ठीक है, बट फ्री मॉक आप सबको देना चाहिए। ठीक है, पेड मॉक भी दे सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पेड मॉक नहीं देना चाहिए, बट पेड मॉक लाइक दो मॉक्स 1100, इफ यू हैव गुड मनी टू स्पेंड, डेफिनेटली यू शुड टेक दीज मॉक्स। बट फ्री मॉक सभी को देना चाहिए, बिकॉज दैट विल गिव यू एन आइडिया कि आप कितना स्कोर कर सकते हैं। सो टुडे वी विल सॉल्व दिस ऑफिशियल मॉक ऑफ 2025। ठीक है, तो आपको डैशबोर्ड में जाना है, नीचे टेस्ट प्रिपरेशन आता है, यहाँ पे आपको एक्सेस नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो एक्सेस नाउ पे क्लिक करोगे सो इट विल गिव यू दिस स्क्रीन। ठीक है, जिसपे आपको मॉक देने का ऑप्शन मिलेगा। सो यू हैव लाइक इफ यू वांट टू बाय, यू कैन बाय दिस, और ये स्टार्ट एग्जाम करके आप देख सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो आपके जो मॉक होता है इसमें फ्री होता है, इसको यू कैन टेक ट्वाइस। तो इसका एक रीटेक ऑप्शन भी होता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट होके आते हैं। ठीक है, जो आपके ओरिजिनल आए थे तो नेक्स्ट टाइम में थोड़े बहुत उसमें से नेक्स्ट हो सकते हैं, राइट। तो वी विल सी दिस फ्री मॉक। ठीक है, तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड जो एनमैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड वी विल सी दिस कि इसको किस तरह से अप्रोच करना है। ठीक है, तो वी विल टेक दिस फ्री मॉक, एंड इसके सॉल्यूशंस भी हम बाद में बनाएंगे कि क्या क्या इनके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस है। टुडे आई विल सी शो कि कैसे सॉल्व करना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, कहाँ पे क्वेश्चंस स्किप करने हैं, राइट। सो दैट देखो, एनमैट में क्या होता है कि अडेप्टिव मार्किंग होती है। ठीक है, अडेप्टिव मार्किंग किस तरह से बिहेव करती है, जैसे जैसे आप सही करते रहते हो लेवल आपका बढ़ता रहता है। ठीक है, बट समटाइम्स इट माइट हैपन कि बहुत ज्यादा चैलेंजिंग क्वेश्चन आते हैं, राइट। तो आप उन क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड ना करो, तो वो चीज हम इस मॉक में देखेंगे। और अ, देखो, इसमें क्या होगा कि 36 क्वेश्चंस पर सेक्शन होते हैं, तो 3 सेक्शन होते हैं। एंड द वंस हु हैव नॉट रिटन दिस एग्जाम बिफोर, कुछ लोग होंगे जो पहली बार एनमैट दे रहे होंगे, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि एनमैट अगर आप पहली बार दे रहे हो तो डेफिनेटली ये मॉक आपको देना चाहिए, ताकि आपको आइडिया आए कि एनमैट किस तरह से बिहेव करता है। अनलाइक सम अदर एग्जामिनेशंस जिसमें एक फिक्स्ड शेड्यूल रहता है, या ऑर्डर ऑफ सेक्शंस कैट की बात करें, पहले वीआर से आता है, फिर डीआईएलआर आता है, फिर क्वांट आता है, इसमें आप ऑर्डर ऑफ सेक्शंस चूज कर सकते हो। ठीक है, सो शेल वी स्टार्ट। तो आप यहाँ पे जो जो लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, प्लीज कमेंट स्टार्ट, एंड देन वी विल स्टार्ट दिस टेस्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप स्टार्ट बोल दो, और वी विल चूज द ऑर्डर ऑफ सेक्शंस ऑल्सो। ठीक है, तो आपको स्टार्ट में जाना है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको चीज नोट करनी है, कि जो ये आपका अ, एक जब एनमैट स्टार्ट करते हो तो एक आपको कुछ गाइडलाइंस आती हैं। ठीक है, ये जो आपको नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है, ये 2 मिनट्स के अंदर अग्री करना पड़ता है। अगर आपने 2 मिनट्स के अंदर अग्री नहीं किया तो एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक बार मेरे सेंटर पे एक स्टूडेंट आया था, उसके साथ ऐसा हुआ था, उसका एग्जाम कैंसिल हो गया था, राइट। सो देयर इज नो चांस टू कम बैक टू इट। तो आपको ये जो टाइम दिया है उसके अंदर आपको फिनिश करना है। ठीक है, कुछ गाइडलाइंस होती है, इतना आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आपको नेक्स्ट 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 करके बस ये होता है कि आप क्वेश्चंस डिस्क्लोज नहीं करोगे एंड ऑल, राइट। एंड देन यू विल हैव ट्यूटोरियल फॉर 8 मिनट्स। ट्यूटोरियल में आप देख सकते हो कैसा इंटरफेस है, एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट द ऑर्डर ऑफ सेक्शंस। तो आप सेक्शन ऑर्डर सिलेक्शन होता है, जो कि और एग्जाम्स में नहीं होता। ठीक है, बाकी एग्जाम्स में क्या होता है कि या तो सारे सेक्शंस एक साथ आते हैं, या फिर जैसे कैट में सेक्शनल टाइमिंग है तो पहले वर्बल आता है, फिर डीआईएलआर आता है, फिर क्वांट आता है। बट इन एनमैट यू कैन चूज द ऑर्डर ऑफ सेक्शंस। ठीक है, तो अभी हम वो भी देखेंगे, तो पहले नेक्स्ट कर लेते हैं। तो ये आपके एक्चुअल एग्जाम में भी ऐसा ही होगा, एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट आएगा, इसको आपको अग्री कर देना है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे टाइम देख रहे हो तो टाइम आ रहा होगा 1 मिनट 53 सेकेंड्स। तो बेसिकली विद इन 2 मिनट्स यू हैव टू मूव अहेड। अगर आप 2 मिनट के अंदर नहीं करोगे अग्री तो ये चला जाएगा। तो आपको इतना टाइम नहीं लगाना है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, जस्ट अग्री। ठीक है, फिर यहाँ पे ट्यूटोरियल आता है।
अब ट्यूटोरियल में ये बताता है कि आपके पास यहाँ पे यू कैन सी टाइमर, यहाँ पे टाइमर है, और अगर आपको क्लॉक हाइड करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो क्लॉक हाइड हो जाती है, ठीक है। इसको क्लिक कर दोगे तो क्लॉक फिर से दिख जाती है, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल कहता है कि आपके पास देयर इज नो प्रीवियस बटन, ठीक है। जैसे बाकी एग्जाम्स में क्या होता है, नेक्स्ट के साथ प्रीवियस भी होता है। अब ये फीचर हमारे मॉक टेस्ट में भी है कि सिर्फ नेक्स्ट बटन आपको दिखेगा, क्योंकि एनमैट अगर आपको देना है तो यही फीचर होना चाहिए कि नेक्स्ट बटन ही दिखे। अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन दिख रहा है दैट इज नॉट एनमैट, ठीक है। तो सिर्फ नेक्स्ट बटन दिखेगा और आप प्रीवियस क्वेश्चन पे नहीं जा सकते, तो एंश्योर यू हैव टू मार्क क्वेश्चंस केयरफुली। फिर नेक्स्ट कहता है कि आपको कैसे क्वेश्चन दिखेगा और आपको कैसे ऑप्शंस चूज करने हैं, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, वो सभी को पता रहता है, ठीक है। और अगर आपका क्वेश्चन पूरा है तो आपको नीचे तक स्क्रॉल करना पड़ेगा। अगर आप स्क्रॉल नहीं करोगे तो आपको एक एरर मैसेज आता है, ठीक है। एरर मैसेज आता है, यू हैव नॉट व्यूड ऑल कंटेंट, मेक श्योर यू सेलेक्ट एवरी टैब एंड स्क्रॉल टू एवरी कॉर्नर। तो आपको अनफॉर्चुनेटली स्क्रॉल करना पड़ता है। फिर आपके बाद में आएगा कि जब आपका एग्जाम खत्म हो जाता है तो ऐसे आ जाता है, यू हैव कंप्लीटेड द एग्जामिनेशन, और फाइनली आपका स्कोर आ जाता है। दे से इट इज प्रोविजनल स्कोर, अनऑफिशियल स्कोर, पर वही एक्चुअल स्कोर कार्ड होता है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में तुरंत आपको आ जाएगा। तो अनलाइक अदर एग्जाम जिसके आपको रिजल्ट का वेट करना पड़ता है, इसमें हाथों हाथ आपको रिजल्ट आ जाता है। जैसे आप एग्जाम कंप्लीट करोगे, नेक्स्ट नेक्स्ट करोगे, ये आपका रिजल्ट आपके सामने हो जाता है कि कितना आपका स्कोर आया। तो सेक्शन वाइज दे हैव सम स्केलिंग फैक्टर, ठीक है। वो स्केलिंग किस तरह से होती है किसी को नहीं पता रहता, ठीक है। तो दे गिव यू अ स्कोर कार्ड व्हिच इज आउट ऑफ 360, राइट। तो हर सेक्शन में 12 से 120 के बीच में स्कोर रेंज होता है, ओके। सो उस पे बाद में डिस्कस कर सकते हैं कितनी कट ऑफ जाती है ऑल। देन नेक्स्ट फिर आपको टेस्ट सेंटर के कुछ रूल्स दिए हैं, ठीक है, ये आपको नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना है। फिर उसके बाद कॉन्फिडेंशियल होता है, ये सब, ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ये सारी चीजें इन पे लिखी हैं। अब आता है क्वेश्चन ऑर्डर सिलेक्शन, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताओ कि आपको कौन से ऑर्डर में, आपको यहाँ पे 6 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 6, आपको बताना है कौन से ऑर्डर में अटेम्प्ट किया जाए, राइट। तो अब ये बहुत सब्जेक्टिव चीज होती है। कुछ लोग कहेंगे कि ये पर्टिकुलर सेक्शन पहले करना चाहिए, वो करना चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्वेश्चन स्कोरिंग में कोई फर्क नहीं आता है, आप किसी भी ऑर्डर में करो। जस्ट कभी कभी आपको साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिल जाता है। लेट अस से इफ यू आर गुड एट वर्बल, सो यू शुड स्टार्ट विद लैंग्वेज स्किल्स, बिकॉज इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है तो स्टार्ट रीजनिंग से कर लो, ठीक है। वो आपको कॉन्फिडेंस दे देगा कि आपके शुरू में क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा ऑर्डर चूज करें। सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको कौन सा ऑर्डर चूज करवाना है इनमें से। आई एम ओपन विथ एनी ऑफ द ऑर्डर टाइप्स, कोई भी ऑर्डर हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो कौन सा ऑर्डर चूज करना चाहिए इसमें, जस्ट टाइप इन दैट व्हाट ऑर्डर डू यू वांट इन विच आई शुड अटेम्प्ट द टेस्ट, क्योंकि फर्क कुछ नहीं पड़ना है। अल्टीमेटली सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, पूरा 2 घंटे का टेस्ट होगा, और 120 मिनट्स में वी विल अटेम्प्ट ऑल द 108 क्वेश्चन। सो सेक्शन वाइज इसमें, ओके, लैंग्वेज एलआर एंड क्वांट्स, ओके। सो लैंग्वेज एलआर एंड क्वांट्स करते हैं। तो लैंग्वेज एलआर एंड क्वांट्स, दैट इज द थर्ड ऑप्शन, ठीक है। पहले लैंग्वेज करेंगे, फिर लॉजिकल रीजनिंग करेंगे, फिर लास्ट में क्वांट करेंगे, ओके। तो आई थिंक आपको कैट वाला फॉर्मेट अच्छा लगता है, वी आर सी देन डी एल आर एंड देन क्वांट। यहाँ पे एल आर बहुत अलग होता है, ठीक है। इट इज नॉट लाइक द टिपिकल एल आर ऑफ योर कैट, ठीक है। Alright, so let's start. So please do like this stream and let's begin the paper. तो सबसे पहले आपने जैसे सेलेक्ट कर लिया तो आपको आ जाएगा कि आपका आपका पेपर स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो द डायरेक्ट स्टार्ट ही हो गया, ओके। सो दिस इज अ पैराजंबल, इट सेज, जो पैराजंबल है 5 ऑप्शंस है। इसे करना क्या है कि द 27% ऑफ द कैनेडियंस पोल्ड, द ओवरऑल एम ऑफ द पोल, यहाँ पे कुछ पोल की बात हो रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये तो फर्स्ट स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं होगा। द ओवरऑल एम ऑफ द पोल, तो देयर हैज टू बी समथिंग अबाउट द पोल। कोरिया वाज इन सेकंड प्लेस एंड जापान इन थर्ड, okay. So there has to be some poll that has to be discussed first, ठीक है। the survey also attempted, also means कुछ तो पहले से है, ठीक है। so अब लास्ट वाला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू अ पोल कंडक्टेड। सो दिस इज द स्टार्टिंग सेंटेंस, सो ई स्टार्टिंग सेंटेंस है, एंड इट इज सेइंग दैट दिस हैपेंड। ई के बाद बी या डी में से कुछ आना चाहिए, अगर हम बी लेके चलते हैं, एंड इट सेज द ओवरऑल एम ऑफ द पोल, राइट। तो ओवरऑल एम ऑफ द पोल सही लग रहा है। ऑल्सो अटेम्प्टेड, तो लास्ट वाला आना चाहिए टिपिकली, तो ये EBCAD हो सकता है। तो पोल कंडक्ट कराया, ओवरऑल एम ये था, फिर उसके कोरिया वाज इन
एंड आइडेंटिफाई कंट्रीज whose people found it most difficult to encourage. तो ये था, बट कोरिया सेकंड में आया. इससे पहले कुछ EA Canadians polled, B EADBC. So this looks more I think ये ज्यादा सही है कि पोल कराया एंड हाउ मेनी पीपल पोल्ड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. सो 27% फ्रॉम कनाडा एंड ऑल्सो एडमिटेड नॉट बीइंग एबल टू डिसएंगेज फ्रॉम देयर गैजेट्स. ठीक है, तो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं. लैंग्वेज विवेसिटी. ठीक है, अगर आपको मीनिंग पता है तो इनको अटेम्प्ट करो, नहीं आते तो फाइन, राइट. इफ यू डू नॉट नो दैट्स परफेक्टली फाइन. I do not know many of these words, so I'll just mark something and move on. ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं सोचना कि अगर नहीं आता है तो just move on. So car seat belts replace harness worn by car drivers. The 3-point seat belt became a popular in 1958 after the public the idea of caught on to the idea या caught. Subsequently the sales of the seat belts dash. So subsequently seat belt sale will increase. So caught on to is the right phrasal verb that will fit here, and skyrocketed means increased. That will be the right one. Okay, now this is a preposition type question. ये बहुत common होते हैं, तो please do practice preposition. We will have some videos also on it, and we have some practice material on this which you can find on our Telegram group. 26 January is celebrated dash great enthusiasm. तो first के साथ तो with आना चाहिए, that is B. Okay, BFD या BFC. The colorful parade starts from होना चाहिए, तो BCF. Everybody walk along the route. So BCF is the right fit. Okay. All right. Let's see the next question. Kind, benevolent. So ये synonyms हैं. Empty, full, blemish, loyalty, absurd, rational, stubborn, obstinate. So that is the one. Having been selected to represent the Association of Indian Managers at the International Convention, he gave a short speech. Okay, so that means he gave a short acceptance speech. That makes sense. A speech had to be given by him. The members congratulated him. The members applauded him. Member congratulates him. Okay. All right. The kind of professors that have emerged in the modern times are very different and novel compared to the traditional occupants of the past and require dash education and training. Specialized forms of exceptional, very different and novel, right? So पहले से काफी advanced है, so obviously specialized forms of training. Different varieties of could also be possible, but let's not break our head on this. So आपको try करना है maximum questions में पहुंचना. There is no negative marking, so try to maximize the attempts. Okay. The spicy and tangy flavors of the succulent chicken were dash of a sprinkle of sugar, a dash of vinegar. So braised with, tempered with, branded with, rendered with, braided with. I think इन दोनों में से कुछ होना चाहिए. Rendered with कर देते हैं. Now this is again a preposition based question. So 4 or 5 questions will at least be from prepositions. Ballet, a formalized dance, further developed dash into a concerned dance form होना चाहिए. Into या through भी fit हो सकता है. D नहीं, D तो है नहीं. To होगा. To a concert dance form. So to is fine. Then the skill is very hard with to master. Second वाला भी आना चाहिए. Skill is hard to master. Developed as a concert dance form makes sense. The skill is hard to master. So ये जो questions होते हैं especially prepositions में कभी कभी होता है एक आपका सही नहीं बैठ रहा तो दूसरे को देख लो. Let us say for example in this case I was not able to get कि इसमें exact क्या आना चाहिए, तो मैंने second वाला देखा hard to master होगा.
तो ए बी एफ एक ही ऑप्शन दिखा रहा है. लास्ट वाला देखो, स्टूडेंट केप्ट टॉकिंग थ्रू आउट द क्लास, विच मेक सेंस. तो ये काफी इजी लगता है मुझे टिपिकली, बिकॉज 3 में से अगर आपको एक भी आता है तो टिपिकली आपके आंसर सही हो जाते हैं. नेक्स्ट कहते हैं कॉमोडियस लग्जूरियस. तो कॉमोडियस मीन्स इट्स अ कॉमोडिटी विच इज इजीली अवेलेबल. लग्जूरियस इज समथिंग एक्सपेंसिव. ओके, कॉन्टोर्शनिस्ट एक्रोबैटिक्स सिमिलर हैं. कास्टिगेट, लैम्बास्ट, अंडरग्राउंड, एबिसल, सेलेस्टियल एंजल, ग्लैडिएटर फाइट. Okay, so let's choose this. Here's a passage, so let's read the passage. अच्छा, पैसेज में क्या करना होता है, यहाँ पे तो ये आपको पूरा दिख रहा है, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है आपको पैसेज पूरा नहीं पढ़ने में आएगा. So let us read this passage quick. And it says William Parker, a researcher at Duke University, said maybe it's time to correct the textbooks. Vestigial organs कुछ बात कर रहा है इसमें. According to Darwin, so the human appendix, tube-like structure. Okay, the best practice in research travel with the frontiers of knowledge, but also challenge earlier observation. So it says कि textbooks correct करने का time है, और it talks about human appendix. Okay, and like we should not teach about such things. That's what it says. Darwin had hypothesized that the appendix, which has been identified only in humans and other great apes at the time, was just leftover part of earlier form of caesium. So it's a science-based passage. Okay, so it is describing that what happens to the appendix, कि वो पहले कैसे होता था, ठीक है, and it is now a vestigial organ which is of no use. ठीक है, तो कोई यूज का नहीं है वो कह रहा है. फिर कह रहा है but scientists have challenged Darwin's hypothesis about the appendix. Darwin कह रहा है कि it is not useful. Scientists have challenged this, right? By using modern methods, they have been able to establish that the appendix has evolved at least twice and has been around much longer than can be concluded from Darwin's ideas about it. It has been discovered that appendix is quite prevalent in nature. It has come to light that several living species have an appendix attached to their well-sized cecum. So they are saying that they have better information. Darwin के पास उतनी information नहीं थी, और जो information इनके पास available है, that is much better than the information available with Darwin. So ये लोग ये facts यहाँ पे present कर रहे हैं, ठीक है. So that's what they are trying to say. And after that they are saying कि to declare an organ vestigial just because no apparent function has been observed would not be scientifically correct. So Darwin is declaring that it is not a useful organ, right? Due to certain illness of human body, the appendix can be surgically removed with no evident harm to the patient, but this does not imply that the organ was functionless. It is possible that other organs assumed its functions. So Darwin said कि this was a vestigial organ and was of no use, but others are saying that this was a useful organ. ठीक है, मतलब पहले यूज में आ सकता था. तो ऐसे ही, तो despite all arguments against allocating a vestigial nature to the appendix, scientists have wondered why an organ with such a function is not universal, and this mystery remains to be unraveled. But this is what science is about, an incessant exploration of trails and new paths. So that's what it talks about कि science में क्या होता है, एक कोई person theory देता है, other people will say that theory is wrong. Okay, so they change the theory. So now we will look at the question. So passage एक brief में समझ में आ गया कि डार्विन ने कहा कि वेस्टिजियल ऑर्गन काम के नहीं होते, बट साइंटिस्ट बिलीव कि क्या पता हुए पहले काम हो सकते थे, ठीक है. अदर एनिमल्स आल्सो हैव एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट. सो एंड दे हैव given the benefits also. It can store bacteria, and beneficial bacteria can emerge from appendix to recolonize the gut. So it has some functions. So Darwin versus scientists, the theory is there. So the central purpose is discredit the evolutionary theory, not necessary, right? Because Darwin put forward the new revelations about vestigial organs in the human body, provide an argument that attempts to give a fresh perspective and explain how concrete proof has established, discuss the different ways science only explores the frontiers of knowledge but also challenges earlier observations. That is the main idea, right? Direct words नहीं use कर रखे. They are saying that you have to tell different ways
science also not only explores the frontiers of knowledge but also challenges earlier observation. What was the earlier observation? That Darwin said कि ये vestigial organ है, and scientists are saying it is better. The last paragraph of the passage, the author makes a statement about the nature of science primarily too. So it says that despite all arguments, scientists have wondered why an organ is not universal and the mystery remains to be unraveled. The science is about an incessant exploration of trails of new path. तो मतलब पास्ट में कुछ होता है उसको इम्प्रूव किया जाता है, ठीक है. So that is the one. Inform the reader that science specifically explores new ideas to displace earlier ones. नहीं, ये ट्रिकी लग रहा है. तो लास्ट दो तो नहीं होंगे. इंडिकेट द डार्विन्स थ्योरी अबाउट द फंक्शन, ये भी नहीं है. ए और बी में से हो सकता है. साइंटिफिक मेथड्स कंटिन्यूअसली स्ट्राइव टू एक्सप्लोर न्यू चैलेंजेस एंड ऑब्जर्वेशंस. Science specifically explores new ideas. No, it is not specifically exploring. Instead, B would be the better option. It is not specifically exploring to displace earlier ones. Scientific methods continuously strive to explore new challenges. तो वो better लग रहा है इन दोनों में से. Close options है although. Scientists, after the new revelations of the role of appendix in the human body, often refer to this organ as a safe house. Which of the following quotations from the passage most directly explains the meaning of that phrase? Safe house. Okay, safe house ये लग रहा है when there is a gut infection, the beneficial bacteria in the gut are depleted. और ये कहना चाहिए beneficial bacteria emerge. So that is why it is a safe house. All of the following phrases in the passage support the observation made by Parker and his team, except time to correct the textbooks, challenge earlier observation, other organs assumed its function, mystery remains to be unraveled. The appendix is quite prevalent in nature. Mystery remains to be unraveled. Okay. Time to correct the textbook, fine. Mystery remains to be unraveled. That looks, because they have unraveled the mystery. Okay, now this is the next passage. Okay, so कभी कभी ऐसा हो सकता है continuous भी passage आ सकते हैं. So NMAT is very random. ठीक है, आपको उसी order में चलना है जैसे questions आ रहे हैं. So it says, be it a glittery evening dress, a classic tuxedo, a chic bohemian cape, or regular pair of jeans, all this may appear as anything. Okay, so it says that the garment industry, they provide different kind of fashion, but also is harming the environment. Okay, it is also burdened with contributing a major share of the environmental pollution. Okay, according to this is considered the second most polluting industry in the world. तो ये कह रहा है कि fashion तो provide करते हैं, but at the same time they pollute the environment. A mere reference to pollution brings to mind the visuals of power plants casting out smoke. This. Seldom do people link pollution with something as basic as so clothes पे लोग fashion मतलब सोचते नहीं कि उससे pollution भी हो सकता है, right? That's what it's saying. The life cycle of an apparel primarily involves 4 major stages. So they have mentioned the stages, right? And the production involves this, and what are the industrial waste in each of these stages. Okay, pro-environment efforts are increasing and measures are being adopted. So now pro-environment efforts are increasing. Okay, and journalists and environmentalists, fast fashion isn't free. Someone was paying to bring down its cost. Environmental agencies appeal the end users to consumers to practice sustainable clothing by encouraging the reuse and recycling of clothes. So that's what basically it means. Ki fashion industry impacts environment a lot. Okay, the practicing sustainable clothing will most likely help. Which of the following stages of clothing life cycle becomes less dyeing of clothes? ये हमें देखना पड़ेगा इस stages में. Selection of raw materials, manufacturing, shipping and disposal. Raw material could be, so raw material में नहीं है. Production of each type involves exploitation. Production and dyeing bring along the horrors of industrial waste. ये the main issues कहाँ पे आ रही है? यहाँ पे आ रही है dyeing of clothes, जिसमें सबसे ज़्यादा issues आ रहे हैं. So that will be the answer. The passage most strongly suggests that in the sentence quoted in the final paragraph, Lucy intends to convey which of the following. So she says that they should tell that people should try to reuse them,
right? uh, the non-monetary cost of consisting environmental degradation caused by disposing of a garment surpasses monetary cost of producing the garment. Okay, so that is what they mean to say. According to the passage, which of the following points state the most comprehensive reason that the fashion industry is the second most? Uh, that makes sense, right? Exploitation of natural resources for raw materials and venting out of factory smoke in the environment. Right, that is the most one. Which of the following statements is most accurately and completely states the crux of the next to last paragraph? So it says pro-environmental efforts are increasing. Okay, the roles of individuals become crucial. Environmentalists, local authorities, waste management companies. So it is talking about the role of environmental preservation, combined efforts of uh, major increase in pro-environment efforts. Like they are increasing, so that's what it is taken care of. Okay, so now let's we are done with the second paragraph also passage also. Let us now see the fill in the blanks question. तो ये फटाफट हो जाते हैं. So anyway, we are left with only 10 minutes, right? Olden days, there were numerous instances where the elderly was considered dash and was encouraged to venerable advice. ये makes sense. Okay, so there is another one that is about Greek philosopher. अब यहाँ पे देखो हमने काफी टाइम स्पेंड कर दिया, राइट? तो अगर हम क्या करेंगे, अगर हम सारे क्वेश्चन पूरा पैसेज पढ़ेंगे तो काफी टाइम लगेगा. सो लेट अस सी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन. In the first paragraph, which of the following does the author link most directly to the quotation from Aristotle? So Aristotle says man is a nature by a social animal, and this is could be arguably looked at the base of human sociality. Same trait of being fundamentally. So it is like analogies between this. Okay, so let's move to the next one. So इसको कुछ highest degree of social organization tick tick tick. Okay, so it is about ants and all. Okay, so let's move to the questions. We do not want to read each and every question. ठीक है, तो next कर लेते हैं. Fundamental prerequisite. So let's just finish it off, right? So let's now see the questions of these are like we need to 12 attempt 13 questions, right? And 9 minutes. Aquarius was associated with the rainy seasons by a large amount की जगह number होना चाहिए, large number of civilizations. So error spotting के questions है. This is considered as an important factor. Our health is important to us, to our families and our employees. B is the first one. No wonder companies. D should be the last one, ideally. D. D. Okay, so ABDC, no wonder companies everywhere have the stake, then Japanese companies. Then it talks about, sorry, that's our health is important, our families to our employees. Japanese companies excel in this thing. And maybe, right, so let's move. By this time, the party is at another of its influence in national politics. At the Nadir Onachi, Nadir is the lowest point. Okay, so that would make sense. That is only one point. The French Revolution is watershed event in modern European history that took place between. Okay, that looks fine. Okay, no error.
occlude impediment, and then we have okay, so do not know the meaning of these words, so just move on. तो ऐसे कुछ कुछ होते हैं एनालॉजी के, बहुत वियर्ड से क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है. मेजरली अ लीफ eating bird, the horizon emits a foul smell because the consumed leaves are fermented in a pouch at the base of its esophagus, a tube that connects the throat to the stomach to make it easily digestible. Hmm, looks no error or possibly D. Okay, so let's do this. German researchers, the stain was found to be, so it will start with B. Okay, German researchers even found, okay, no, there has to be something else. A should be the starting one. There are some people who relate anger to upbringing or food intake. Okay, A, D. However, the discovery and isolation of a certain gene explains why this happens. German researchers found out a certain strain, the strain. So BC is a pair and ADBC makes sense. The manager's eye lingered. He was looking at she shivered by fear. हो सकता है नहीं, by तो नहीं. DAE. She shivered in fear. The manager's eyes lingered at the new recruit. Okay, 10 versus something tiring. Membrane looks. So these are some like analogy based, could be quite difficult also. Okay, so just avoid those because कुछ कुछ बहुत अजीब अजीब से हो सकते हैं, आपको वर्ड के मीनिंग ही नहीं पता होंगे. ठीक, सो एनीवे वी शुड हैव डन द पैसेज. तो हो सकता है 4 मिनट जो हमारे पास बचे हैं उसमें हमने वो अटेम्प्ट कर लिया होता है, बट दैट्स फाइन. Hilda pianist is thrilled because I was speaking as well. अगर बोल नहीं रहा होता, जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करा, तो probably I would have done that passage also. A pianist is thrilled that she will be going to the College of Fine Arts and working with the talented music faculty. Okay, that makes sense. Okay, so there are a lot of parajumbles in this test. One ticket for that date. Okay, so I think the story starts with my sister who lives in Seattle wanted us to be present, and then we tried very hard. We were able to obtain only one ticket. Then, since I did not have the pressing demands on my time, I decided to make the trip. Okay, so like story was like the sister wanted them. They had only one ticket. Then she decided to go. Then her husband was concerned that I was traveling alone, and then this talking about the airport, she reached there. Okay. Claude is the only one of the people who have received the Best Employee Award in his school. Claude is the only one of the people. The only one looks absurd. Claude is one of the people. The only looks wrong here. The author's stories revolve around the lives of people in diasporic situations, that is, situations in which communities of people who dash in other geographic locations.
move from their homelands usually wanting to improve, usually because they want to improve from their homelands, usually with the need of improving. Now this is the this makes sense. Like it is about a parallelism. Usually want to improve and settle. So like ing form नहीं आएगा. जैसे इसमें क्या हो रहा है? Like move from their homeland, usually wanting to improve. This makes more sense. Usually want to improve their quality of life or livelihood and settle elsewhere away from their homelands in other geographic locations. B also looks good. इसमें क्या लग रहा है कि इसमें like it is redundancy. इसमें redundant लग रहा है. Settle elsewhere और यहाँ पे भी in other, like they are talking two times. Settle elsewhere away from their homelands in other geographic locations. Leave their homelands usually because they want to improve their quality of life or living, livelihood, settling. So quite a challenging one. I mean, like if you have a lot of time to think through the problem, then you should attempt it. Okay, so let's go with this answer. Okay, so we are done with the section. We did in the appropriate time. Okay, so the purpose is to try to attempt the maximum questions. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन तक पहुंचोगे तो देखो गलत होगा तो मतलब नेगेटिव नहीं होता, बट अगर कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो ज्यादा स्कोर नहीं बनेगा. तो अटेम्प्ट तो आपको ज्यादा पहुंचाने होते हैं. अब ये भी नहीं कि रैंडम अटेम्प्ट करो. ठीक है, ऑब्वियसली यू शुड हैव जेन्युइन अटेम्प्ट्स. Now we will move to the LR section. So this is how it looks. जब आपका पहला section खत्म होता है, it will give you that this concludes the particular section, and then you click next, and the next section will begin. There's a logical reasoning, 36 questions, 40 minutes. So it will have more time. Let's begin with the section. Okay, so it is syllogism. ये easily हो जाएगा. Some lectures are theories. So it's the lecture theories. No theory is practical. All practicals are interesting. Some theories are interesting. No. No lecture is practical. That is also incorrect. And some practicals are lectures. That is also incorrect. So none of these follow. ठीक है, तो आप पेन लेके इसको सॉल्व कर सकते हो अपने नोटबुक में चाहे, और फिर इसके सॉल्यूशंस anyway we will create. So it says a research concluded that the presence of dogs can boost infants' immune system. Household contacts with dogs have resulted in reduced susceptibility to colds. Okay, so it says presence of dogs boosts immune system, right? The hypothesis assumes that unhygienic surroundings. Okay, it says unhygienic surroundings because dogs bring some unhygiene to the house, right? And then builds immune system in children. A new technology is said to improve the quality of images. However, a survey revealed that a lot of companies did not plan to switch over to the new technology. Which of the following is implied? Okay. So it is possible that like they think that may not be successful. Printing solution, maybe quality of images. Longer time to dry is not out of scope or no mention of it. Cost of switching could be the place. Last वाला तो नहीं होगा, third वाला भी नहीं होगा. Quality of images could be the one because they have improved the cost वाला B या D में से होता है. Cost of switching from existing technology, that is possible because cost of switching to technology can be the problem because cost is also mentioned over here.
But I will go with quality of images because primary focus is on quality of images. Okay, so now it says that our study estimates that robotics will job adversely. Okay, so it is saying that how like people are unskilled and it affects the job market. So first course of action makes sense. The private and public sectors will make substantial but judicious investment, capture new opportunities. Hmm, learning new opportunities for growth. So one and two make sense. Third is off topic, not talking about this student should work part time. That is not something which is talking about. So it says company C has recently installed a biometric system and they want to maintain an accurate record of time and correct to employ for this purpose. Employees will be more cautious about the time and they ठीक है punctual वाला तो सही है strong argument. Then it says the biometric system will ensure that the employees take fewer breaks between work, thereby increasing their efficiency. ठीक है fewer breaks भी हो जाएंगे. The company will save the time and effort that goes into. So all these three arguments अच्छा but all वाला ही नहीं. एफिशिएंसी वाली बात सही नहीं लग रही क्योंकि नॉट नेसेसरी कि 1 and 3 आर स्ट्रॉन्ग बिकॉज जरूरी नहीं अगर बायोमेट्रिक सिस्टम लगा दिया एंड पीपल विल स्टे इन साइड एंड वर्क बिकॉज नॉट नेसेसरी लाइक लोग ऑफिस में बैठ के भी चिल कर सकते हैं राइट इट इज नॉट नेसेसरी दे विल वर्क बट डेफिनेटली they will be more cautious about the time and of course they will save the company will save effort of manual recording of in time and out time so that makes sense it is not necessary that people are inside they will have better efficiency okay so they can still talk with each other and do this okay so oh wow now nice input output it says Sachin Tendulkar Martina Navratilova Andre Agassi Ronaldo Mary Kom ठीक है अब इसमें हमें देखना है कि नंबर्स कैसे जनरेट कर रहा है वो इंटरेस्टिंग है step 1 is we need to figure out step 2 is step 1 into like step 1 into step 1 plus 1 okay 5 into 6 8 into 9 okay step 3 is step 1 into step 2 right step 4 is minus 35 80 okay step 4 is basically step 3 minus step 1 minus step 2 okay and step 4 is sum step 5 is sum of digits subtract कर लिए step 5 minus sum of digits ठीक है step 4 minus sum of digits हमें पता लगाना है कि step 1 कैसे अराइव हो रहा है सचिन तेंदुलकर 5 मार्टिना नवरातिलोवा 8 आंद्रे अगासी 5 रोनाल्डो मैरी कॉम अब ये कैसे डिटरमाइन होगा ये थोड़ा सा ट्रिकी है बिकॉज स्पोर्ट वाइज नहीं कर सकते Ronaldo is 3. Andre Agassi and Martina. What is common between Sachin Tendulkar and Andre Agassi in this? It has to do something with the name. So anything that you can think of? This is very tricky. Step 5 का output पूछ रहा है. Step 5 का output has to be
नाउ इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आई एम अनेबल टू फिगर आउट लॉजिक ऑफ स्टेप 1, ठीक है, इफ एनीवन नोज द लॉजिक ऑफ स्टेप 1 प्लीज कमेंट इन द आंसर्स, राइट। अब देखो स्टेप 5 निकालना है हमें इस पर्सन का, और देखो ऑप्शंस क्या दिए हैं, लाइक सी ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए, देखो 5 में 108 आ रहा है, 8 में 477 आ रहा है, 3 में 18 आ रहा है, 2 में 0 आ रहा है, ठीक है, बट ये ऑप्शंस क्या है, ये 2 3 से बड़े हैं और 4 5 से कम है, सो वी विल स्टार्ट विथ 4, ठीक है। तो पहला स्टेप 4 ले लेंगे, दूसरा स्टेप आ जाएगा 4 इंटू 5 20, थर्ड स्टेप इज स्टेप 1 इंटू स्टेप 2 दैट इज 80, ठीक है। फोर्थ स्टेप विल बी 80 माइनस दीज टू दैट विल बी 56, 56 माइनस 11 45 आपका आंसर आ जाएगा, आंसर होगा 45, 56 माइनस 11 45, तो आंसर 45 है, बट फर्स्ट स्टेप मुझे अभी भी फिगर आउट नहीं हुआ, सो आई विल मूव ऑन, ठीक है। वेंकटपति राजू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट एट एनी स्टेप, ठीक है, तो वेंकटपति राजू इज द इनपुट, ठीक है। तो अब देखो हमने ये जो इनपुट्स हैं 4 का हमने ट्राई कर लिया, लेट अस ट्राई विद 6, 6 into 7 is 42 which is one of the outputs, 42 into 6 is 252, 252 minus 48 204 and 198, तो इसके सी इस केस में हमने वेंकटपति राजू में 6 लिया है, अब वो 6 कैसे है वो नहीं पता, बट 42 244 will not be in any of the steps, ठीक है। तो आप इसके लॉजिक स्टेप्स लिख सकते हो और ट्राई टू फिगर आउट, ये मुझे बाद में पता लगाना है, लेकिन आपको एग्जाम में यही क्लिक करना है कि आपको फर्स्ट स्टेप नहीं पता तो ट्राई करके देखो। सो स्टेप 1 इज 11, which of the following is an output at any of the steps, तो फर्स्ट स्टेप इज 11, 11 into 12 is 132, बहुत अच्छा सेट है, लॉजिक समझ में नहीं आ रहा कि फर्स्ट स्टेप में कैसे जाना है, उसके आगे का लॉजिक समझ में आ गया, ठीक है। सो वी विल ट्राई टू यूज दैट, 132 आएगा, 11 into 12 होता है, और 132 into 11 कर देंगे, so that is 22, 2 carries 143, 145, 1452, 1452 minus 143 is 1309, 1309 and minus that is 12 and 13, that is 1296, so इसके steps हैं, 1452 is one of the steps। स्टेप 1 में 9 आउटपुट है, आउटपुट एट स्टेप 4, 9 into 10 90, 90 into 9 810, 810 minus 99 is 711, so स्टेप 4 में आ जाएगा 711 आपका आंसर, बट अभी तक मुझे ये फिगर आउट नहीं हो पाया कि स्टेप 1 कैसे निकलेगा, सो देखते हैं सबसे इंटेलिजेंट आप में से कौन है और कैसे स्टेप 1 आ सकता है, एनीवे जब मैं बाद में सॉल्व करूंगा टाइम लेके तो इसे फिगर आउट कर लूंगा। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट set of questions. Okay, so it is saying that just as there are more right-handed than left-handed people, right-eyed people than left-eyed. Right-eyed means that vision of right eye is little more accurate. So ये सब कह रहा है, ठीक है, ये सब definition है. Which of the following would most strengthen this argument? Argument क्या है कि right eye आपका there are more right-eyed people. Okay. So it says that in all countries among people who are right-eyed, more people are right-handed than left-handed. Vice versa, कोई correlation नहीं है. People move their right hand in a rotatory way to drive on the right. Okay, so ये कह रहा है this because in countries where people drive on the left, the right eye is more responsible for awareness. In countries where people drive on the right, they use the right eye more than the left eye. Okay, that makes strengthen the steering wheel. Steering wheel to the left, right eye sees smaller portion of the steering wheel than does the left eye. Okay, let's go with this argument. Okay, if you spend a lot of time just figuring out the argument, of course, it will be this. Okay, cube based question are interesting. 6 into 6 into 6, cube is cut into pieces and mental. How many cubes have all three painted sides? So all three painted are always 8. Right, so two painted sides. So for this, see, there are formulae. Okay, so all painted is basically none painted is 64. Okay, none will be 64. All three will be 8. Two painted, I know for one painted, so I will calculate one painted first. On all surfaces, we will have 16 into 6, 96. 96 one painted हो जाएगा, तो two painted हो जाएगा 48.
The three painted is none painted is n minus 2 whole cube, right? So none painted is 64, all painted is 8, that is a standard result, and one side painted is n minus 2 whole square into 6. So 16 into 6, 96 will be one side painted. So remaining will be two side painted. So 168, so 48 will be two side painted. Okay, चार क्वेश्चन मिल गए, बहुत मजे आ गए. नो साइड पेंटेड 64 and one side painted is 96. So that is for the very first time I'm seeing cube based question in NMAT. Maybe possible that they might have this kind of question, right? So let's now see the next question. Okay, there are 5 animals and each on the 4 faces and its base. Okay, 5 animals, डियर एलिफेंट. अच्छा, जिसने इसकी कोडिंग की उसने एम डैश को एम डैश ही लिख दिया. देयर शुड हैव बीन एम डैश ओवर हियर. ठीक है. Pictures of zebra are drawn each of the 4 faces and on its base. Okay, 5 animals are drawn, one on all the 4 faces and its base. तो ये शायद पिरामिड की बात कर रहा है. क्वेश्चन मुझे इनकम्प्लीट लग रहा है. ठीक है. तो ओके, आई थिंक एक क्यूब की बात कर रहा है कि एक क्यूब के 5 एनिमल्स में बने, 4 फेसेस में बने और एक बेस में बने हैं. Zebra, lion, elephant, fox and deer are drawn. If second statement भी वही कह रहा है, so some information I think is missing over here. तो question इनने properly input नहीं किया क्योंकि first और second statement same बात बोल रहे हैं. Okay, each picture is painted in same different color: blue, gray, black, yellow, brown. ठीक है. The lion which is in brown color is not on the opposite face of the black colored picture. Deer is in the adjacent face of the blue colored elephant. तो 4 adjacent होगी. ठीक है. और elephant, so we will make 4 adjacent ones. ठीक है. अब ये बनाते कैसे हैं? When I create the solutions I will share that with you. ठीक है. यहाँ पे एक possible drawing नहीं हो पाएगी शायद. ठीक है. या फिर मैं ट्राई करता हूँ एक पेंट खोल के, अगर यहाँ पे drawing possible हो जाए. I will solve this question. I am finding this interesting, although this might impact कि question सारे solve नहीं हो पाएंगे, but let's solve this one, this particular question. ठीक है. तो ये क्या कह रहा है? यहाँ पे एक क्यूब बनाएंगे. ये 4 एडजेसेंट फेसेस हैं और एक बेस मान लेते हैं ये. ठीक है. इन पांचों में हमने करना है. ठीक है. जेब्रा इज नॉट अपोजिट टू द येलो, ग्रे कलर्ड पिक्चर इज नॉट एनी ऑफ द फेसेस. तो ये ग्रे यहाँ पे आपकी बेस में आ जाएगी. ठीक है. लायन, द डियर इज एडजेसेंट टू फेस ब्लू एलिफेंट, ब्लू एलिफेंट. और इसके एडजेसेंट है जेब्रा. नहीं नहीं, डियर, डियर है. अच्छा, डियर यहाँ भी आ सकते हैं वैसे. Lion is brown and not opposite to black. Not gray. Zebra is not in gray. Not opposite to the yellow. So zebra is not opposite to yellow. So zebra might be here. Black colored picture. Lion brown, not opposite black. Zebra is not here. So let us go with this lion and brown. Okay, one possibility is this. Okay, lion brown, it is not opposite to black colored picture. So that is fine. The deer is on the adjacent face of blue elephant. Okay, the zebra which is not in gray color. So let's say zebra is here, not opposite to the yellow colored animal. So it could be yellow one. And one animal is left, that is fox. And deer might be the other color, that is black. So that is one possibility. Deer is blue. Zebra is black. Not true. तो ये तो सभी सही होते जा रहे हैं. Okay, so we made a mistake over here.
आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन लेटर, ठीक है, मतलब अभी मैंने ट्राई करके देखा बट बन नहीं रहा. बट इन द एग्जामिनेशन यू शुड नॉट बी थ्रिल्ड बाय सच इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लग रहा है कि 4 साइड्स में आपको एनिमल्स प्लेस करने हैं और एक बेस पे होगा. तो ये बेस है और ये 4 एडजेसेंट साइड्स हैं. Okay. So it is interesting, but in the examination scenario you should be skipping it. तो वही हम करेंगे कि see the purpose is to tell you कि कुछ questions बहुत interesting लग सकते हैं, उनको देख के excited नहीं होना, right? So I will skip it for now. ठीक है, तो कुछ भी random mark कर लेते हैं. Yellow and gray opposite, so कुछ हमारा mistake हुई है. Gray is interchanged, brown something random mark करके आगे बढ़ते हैं. डियर एलिफेंट हमारे एडजेसेंट थे. डियर एलिफेंट तो यहाँ पे दिए ही थे. डियर डियर और एलिफेंट ये तो क्वेश्चन में ही दिया, तो लेट्स से 1 मार्क्स तो इसमें सही हो गया. पिक्चर्स ऑन ऑपोजिट प्लेसेस, ग्रे ब्लैक येलो ब्राउन कुछ भी कर देते हैं. ओके, सो एक्साइटिंग क्वेश्चन, आई विल सॉल्व इट लेटर. बट कई बार ऐसा भी होता है कि आप बहुत अच्छे भी होते हैं पर एग्जाम में सॉल्व नहीं हो रहा था, तो वहां पे आपको ईगो नहीं लेनी, ठीक है. मतलब जैसे मेरे से सॉल्व हो जाएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बट एग्जाम में नहीं हो रहा तो उसको नहीं करना है, ठीक है. ऐसा नहीं कि आपको इंटरेस्टिंग लगा वहां पे करना है. मेक स्मार्ट मूव्स ड्यूरिंग द एग्जाम, दैट इज व्हाट मैटर्स. तो क्योंकि नया टाइप का ट्रिकी लगा, इनपुट आउटपुट व्हाट आई डिड, जो फिगर आउट हो पाए वो किया, और जिसमें अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना कि भाई ये पहला स्टेप नहीं फिगर आउट हो रहा. तो आई ट्राइड विद सम हैक्स ओवर हियर. ऑलराइट, नाउ लेट्स सी आर्गुमेंट बेस्ड क्वेश्चन. सी वी आर मिडवे, लाइक 20 मिनट्स में हमने 18 क्वेश्चन कर लिए, तो एक सेट छूट भी गया, तो होपफुली कोई इनपुट आउटपुट या कुछ फ्यूचर में आएगा वो हम कर लेंगे. The government of every country needs to allocate a minimum fixed minimum budget for research and development in astronomy. तो उसमें मिक्स मिनिमम बजट होना चाहिए, और पीपल यंगर जनरेशन शुड हैव इंटरेस्ट इन दिस. शुड गवर्नमेंट ऑफ कंट्री डू सो, तो गवर्नमेंट को करना चाहिए कि नहीं. नो कंट्री डी हैज नो पब्लिक फंड्स अवेलेबल ओवर एंड अबव व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन, एंड देयर इज नो रीजन टू बिलीव दैट रिसर्च इन एस्ट्रो साइंसेस इज अमंग दोस बेसिक नीड्स. राइट, दैट मेक्स सेंस. ठीक है, अगर बेसिक नेसेसिटीज ही फुलफिल नहीं हो रही है, लेट अस से एक अफ्रीकन कंट्री ले लो, ठीक है, उसकी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल नहीं हो रही है, स्पेस रिसर्च में कैसे जाएगा, right? So that makes sense. Second says research and development in astronomy and space science require massive amounts of public funds and would not offer many employment opportunities. Second does not make sense to me because employment opportunities तो होती है उसमें. Unlike proposals for public spending directed towards meeting basic needs, proposals for public spending on research in astrosciences have gained little or no support in country D, which is a democracy. People, okay, proposals have gained little or no support. देखो कई बार क्या होता है कि कोई चीज सपोर्ट मिल रही है या नहीं मिल रही है, बट ये इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है. सो थर्ड वन इज नॉट स्ट्रॉन्ग बिकॉज लाइक इट इज नॉट गेनिंग, like spending direct towards is not getting much proposal. That does not mean ki we should not do it, okay. But first is the appropriate one, because if the basic needs are not met, then definitely you will not go into space research. Mr. Dixon is the head of service engineers at an organization. He is in a hurry to meet a client at the location to solve some machinery issues. At the same time, there is problem with critical piece of machinery at Mr. Dixon's own factory, and the production manager is requesting his presence to solve it immediately. So he has to meet a client and he has some issues at his own factory. तो ऐसे situation में क्या करना चाहिए? This is course of action based question. Visit the client and then come back, address the issue at the factory. See, it has to be solved immediately. Inform the production manager that he will be available after some time. Send a senior service engineer to his factory and personally visit the client location. Solve the issue at his factory first and then visit the client, keeping them. So, like client को तो आप नहीं रोक सकते. Send a senior service engineer to the client location and personally attend the issue at his own company. Okay. So that makes more sense because आप पहली like आपने फ्लाइट में भी सुना होगा ना, पहले अपनी सुरक्षा पहले करें, right? So same thing here. पहले अपनी फैक्ट्री देखेगा, राइट. उसकी खुद की फैक्ट्री है, उसकी फैक्ट्री में इश्यू आ गया, तो वो सबसे पहले अपनी जगह अपनी फैक्ट्री में जाएगा एंड सेंड सम सीनियर सर्विस इंजीनियर. ओके, सो क्लाइंट को भी सेटिस्फाई कर रहा है और क्लाइंट की जो सो मशीनरी इश्यू है वो भी फिक्स हो जाएगी, अपनी भी हो जाएगी. सो फर्स्ट प्रायोरिटी हैज टू बी गिवन टू वन सेल्फ, राइट.
आप किसी दूसरे की जगह जाने से पहले अपनी खुद की फैक्ट्री की इंपॉर्टेंस चेक करोगे, तो दैट मेक्स सेंस ओवर हियर. All right, next question. According to the observations, the self-motivated lot set up their own targets with content, figure, or achievements. Uh, there was Shirky a lot who would always look at ways to shirk their work, whether the external motivation. For the most part, though, the workers' contributions were in direct proportional to external motivation. So it is saying that there are self-motivated and there are people who need external motivation. And for the most part, the workers' contribution were in direct proportion to external motivation. What can be concluded? Hmm, would gain by having more of the motivated lot. That makes sense, right? Because they are self-motivated and there are other shirkers. If they are motivated, they will work better. Okay, so that looks to be the plausible conclusion. The environmental agency just mandated the purchase and installation of dual fish toilets and this. The short dual flush toilets. The short flush would dispense 5.5 liters, regular flush 8.5. This mandate was withdrawn after the agency actually increased household water. To explain this, ओके ठीक है. तो शॉर्ट फ्लश पीपल वर प्रेसिंग इन मल्टीपल टाइम्स. तो अगर मान लो 2 बार दबा दिया तो पहले 8.5 लीटर होता था, तो 2 बार शॉर्ट दबा दिया तो 11 हो जाएगा. मैथमेटिकली आप कह दोगे ज्यादा वाटर खर्च हो रहा है. ठीक है. assumptions the agency wanted to verify that 3 liters of water would lead to meaningful provision. ठीक है. तो उनको ठीक है, they had this assumption, that is why they put it. Okay, so that makes sense. At the time of mandate, water conservation was more important for the agency than cost and potential inconveniences to residents. Cost की तो कोई बात नहीं है. Potential inconveniences. Agency had believed that residents would realize the act. So yeah, so third is implicit because they believe that residents will use that. Okay, so yeah, so 1 and 3 make sense. They wanted to verify that it will save water, and then third also that they believe people will follow it. Okay, now this is an easy one. It says that overlapped areas product of the numbers of each figure in the diagram. Okay, so overlapped area आपका product of figure है. इस question को आप भी try करो. ठीक है. और यहाँ पे ये एक circle बनता है. Okay, so D circle is 6, 2 and triangle is 4, right? So पहले करेंगे सिर्फ triangle, that is E, that will be 4. ठीक है. Then A will be 6 into 4, 24. D is 6 into 2, that is 12. C is product of everything, 6 to 642, that is 48. And B is triangle and rectangle, so that is 8. Okay. What is the value of 5C upon 2A? 5C is 240 and 2A will be, A is 24, so 48. That will be 5. Okay, this one easy one. So easy pickings should be done, right? Last year, Currently F launched a new tax portal available as a website and a mobile phone app for the country's taxpayers to access anytime and anywhere and file their taxes. The government of country F observed that a larger portion of taxpayers filed their taxes on time. So it says that the tax portal helped people file the taxes on time. Okay. So conclusion is the new portal has not significantly impeded time filing of taxes. No. The government has relaxed the tax paying timelines and policies. Yes. Anywhere and any access any time. That does not mean कि timing change हो गई. ठीक है. Any time means रात में भी भर सकते हो, दिन में भी भर सकते हो time. Not significantly impeded. Almost all taxpayers are not aware now aware. Uh, that makes strong word. Almost all तो बहुत strong word हो गया.
तो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, अगर यहाँ पे मैनी वर्ड होता तो सही होता। ठीक है, द गवर्नमेंट हैज रिलैक्स द टैक्स पेइंग टाइमलाइंस एंड पॉलिसीज, मे बी रिलैक्सेशन वाला फैक्टर हो सकता है, बिकॉज इट सेज एक्सेस एनी टाइम एंड एनीवेयर, although not clearly stated. Okay, it says in a group of 150 students, 80 like pop music, jazz music, and 70 this. Okay, so ये Venn diagram based question है, Venn diagram कर लेना, इससे individual questions आ सकते हैं. Yeah, what is the maximum number of exactly one type of music? So we have pop, jazz, and instrumental. Pop is one, pop is 80, 40 is jazz, and 70 is instrumental. Okay. And we need to tell one type of music maximum करें. Okay, so we will put x in between, that is 30 both pop and jazz, that will be 30 minus x. Although ये करने लायक question नहीं, क्योंकि काफी time लगेगा, but since we have sufficient time, I'm taking a bet on it because I know I will get it right. 25 like both jazz and instrumental. So 25 minus x, and then we have 20 pop and instrumental. 20 minus x. So add करके ये हो जाएगा x plus 30 x minus 15, 45 x plus 25. एक तो हमारा टोटल निकालना है एग्जैक्टली वन टाइप ऑफ म्यूजिक। तो पहले हम करेंगे, पहले इसको 8 कर लेते हैं, 80 10 15 minus 35 minus, yeah, dx. This should come 100, ठीक है, as per my calculation. So center value you take x, combination of all three. So 3x plus 40 will be exactly one type. Okay, so when we draw the solutions, then I will tell you how it is done. ठीक है, तो चलो next question देखते हैं. So very soon next week probably we'll have the solutions of this mock. The next question देखते हैं. Many high-rise buildings that are proposed for upcoming construction are expected to be higher than the existing skyscrapers. Therefore, strict assessment for safety against earthquake and its related impact have become more significant. Okay, so it says that high-rise uh, building, they need safety against earthquake. Assumed in the above argument, earthquake is the only threat. No, high-rise buildings cannot be built within earthquake-prone areas. Not that. Not important. Must have some control, that makes sense, but again, cannot be built in earthquake-prone. Cannot be built is extreme. Okay, so this fact-based questions are also asked in NMAT. Cheeseburgers and 2 cheeseburger plus beverage is equal to $10. Two more beverages. So 1 cheeseburger plus 3 beverage is equal to 10. And cheeseburger outside the combo cost $5. तो कॉम्बो में 4 है, ठीक है, आउटसाइड में तो चीज बर्गर 4 का है और बेवरेज 2 की होगी, तो 2 cheeseburger प्लस बेवरेज इज 10, 1 cheeseburger, सो आउटसाइड से चीज बर्गर आपका आएगा 5 का। ठीक है, तो ये हमारे फैक्ट्स हमें गिवन है कि चीज बर्गर $4 का आ रहा है एंड द बेवरेज इज ऑफ $2,
So 2 cheeseburgers plus beverage will be 10, and 1 cheeseburger plus 3 beverages will also be 10. The cost of cheeseburger is double that of each beverage. First is a fact. Combo would still cost the same if 3 were charged for each cheeseburger and a customer wanted to include a $2 pizza too. It costs ठीक है 2 cheeseburgers. ठीक है, तो अगर $3 each cheeseburger का होगा तो $2 बच जाएंगे. So second is also a fact. If the combo included one more beverage at the same rate. So first and second are facts. Third is not a fact because $14 तो नहीं होगा. Combo included one more beverage at the same rate. It would make 12. Okay, beverage is $2. Okay, all right. So let's see the next one. Each of the vowels in the word complex is replaced by number 3. Consonant is okay, C by 1, M by 3, and so on. So this is an interesting, easy question that should be done. So complex को हमें क्या करना है? Vowels is replaced by 3. So O will be replaced by 3, E will be replaced by 3, and consonants is by position. So C by 1, M by 3, P by 4, L by 5, X by 7. Total of all the numbers when the replacement is complete. So 1, 3, 3, 4, 5, 3, 7, 3, 7, 10, 19, 20, 26. So total will be 26. एक बार फिर से देख लेते हैं. 7, 7 plus 9, 16, 26 आ रहा है. None of the above the answer. All right. So fact says that X studies a music class, plays double bass. Okay, X is music plus double bass. Then Y studies in the same class, which comprises 5 students and plays violin. So there are 5 students in the class and Y plays violin. And of the students in the class who play either the cello or the violin, 4 do not play both. So 4 do not play both. So there are only 5 students in the class. 4 do not play both. So that means 1 plays both. So violin and cello. So one person plays both violin and cello. Why does not play the cello? We cannot tell. And at least one student in the class plays the violin. That is true. Okay, that is given to us. So second is a fact. Third one we cannot tell. So second is the only fact. Okay, third we cannot tell that there is exactly one student who plays neither the cello nor the violin. There have been a lot of deaths of policemen fighting insurgents in several attacks in many states of the country. Course of action is policemen should be avoid going to such places to maintain peace. The government should provide them protection. So protection makes sense. Policemen not going to the places is not a case, right? Okay. So the government should try to negotiate with these forces and bring them to the mainstream. No, second is should be the only course of action which makes sense over here. Small businesses often struggle to keep up with the competition of larger, more successful companies. In order to keep their business alive, small business strategies that will set them apart. Competitive, one of the most strategies to develop relationship with customer, positive customer experience, right? So that is what it's saying. So it says, what is the most important recommendation for small businesses to remain competitive? Positive relationship with customers. Okay, that is what it is talking about. Easy one. Okay, company X upgrade the employees can only perform some tasks. So not reading the entire passage, just marking 2 and 3. अच्छा इसमें करना है कि we need to find out the reasonable choice value in the question mark. 312 312 को अगर मैं 13 से डिवाइड कर देता हूँ, 13 2 is 26, 5 52 24. So बाकी 4 numbers हमें 24 obtain करना है. 14 10 is 24. So basically it is sum of all numbers on the corners and multiplied by the number at the bottom right. ठीक है.
So then we have 4, 18, 13, 7 आना चाहिए. Okay. The official side won't lend them a tiger. Zoo I refuse, including the fact that climate in the region is not suit tiger. The official people saying they can provide an artificial environment. Okay. The official again refuse to lend a tiger. Correctly inferred. Do not lend their animals. Not necessary. Concerns that the official did not address. That is also not true. Possible to maintain climatic. Not possible for a zoo. Possible. That is could be the answer. Large spaces out of the scope thing. Cannot be created. So very likely that the environment cannot be created because that is why they are not sending the tiger. Debate club member, it says that so many people consider the conservation of species that they even young children know the terms wildlife conservation. I question the idea of conservation in a general sense. Few people, I'm sure, I will miss the vacuita for they were a good. Those would feel like tigers and bears not good. Okay, so it is saying that very few people heard of this vacuita. Okay, and that's what it says. Which of the following if true would weaken this argument? Argument is saying that people want to know these terms, but they do not know about this particular animal. Okay, there exists official list. Reasons for conserving. Reasons for conserving beyond the potential to appreciate their existence. That will weaken the argument. Okay. Or one could also be the one. A multi-branch level travel company decided to diversify its business, e-commerce, and they what this was online bookings, successful online venture. Okay, so skills that are needed in other division. Okay, so there are skills, there are issues with like skills of the employees. Okay, no, terminate is a harsh term. C is a more soft one. Okay, so I think it is done. Now I cannot change also. So C makes more sense. Okay, because fifth option was very harsh one. Okay, that terminate the people. ठीक है तो रीजनिंग भी हो गया. Now we will do the quant section. So quant will have more of rough work. ठीक है. Let's see. So this paper was good. Like reasoning we were able to do better because एक जो वो जो puzzle था we skipped that puzzle. Cube one was fine. Okay, and one of the puzzles we skipped input output was the first step was tricky. The other steps were fine. And the critical reasoning I found slightly shorter this time. ठीक है ज्यादातर क्वेश्चन छोटे छोटे थे कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो लास्ट ईयर काफी लंबे होते तो पैसेज बेस्ड इसमें कम दिखे. Okay, so that is overall we can say about it. Okay, so let's start with the quant section. So please do like this video और फिर इसके solutions बाद में बनाएंगे डिटेल में. ठीक है ताकि एक एक क्वेश्चन बन चले क्योंकि अभी अटेम्प्ट करने में तो ठीक है ट्रिक्स विक्स लगा के अटेम्प्ट कर देते हैं या फिर ऐसे ही मार्क कर देते हैं. तो लेटर ऑन वी विल डिस्कस इन डिटेल कि कैसे इसे प्रॉपरली अटेम्प्ट करना था एंड पॉसिबली द ट्रिक्स विच वी यूज्ड इन सम ऑफ द क्वेश्चंस हाउ टू थिंक ऑफ दोज ट्रिक्स. तो उसके सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे. So let's start with the quant section.
Sam, Tim, and 10 other people are randomly positioned in a queue. What is that? Sam and Tim will be positioned next to each other. So एक probability बना देते हैं कि there are two Sam and Tim we will place together. So there will be 11 people, right? So 11 factorial into 2 factorial into 2, because they can be positioned in any way, by 12. So that will be 2 by 12 or 1 by 6. A vendor buys 10 metal pieces each at the same price, however, sells a different selling price. First piece 3 times his cost price, sells the selling price that is 3 times the selling price of the first piece, and third is 10 3 times, and so on. So after 8% profit on the sale of फर्स्ट 8 मेटल पीसेस, ठीक है. सो 1111 आपका कॉस्ट हो जाएगा, कॉस्ट आपका 8 है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस निकालना है. सो फर्स्ट का 3139, फर्स्ट पीस एट द सेलिंग प्राइस 3 टाइम्स इट्स कॉस्ट प्राइस कह रहा है ना, 3 टाइम्स इट्स कॉस्ट प्राइस 3927 81. आप मैनुअली ऐड भी कर सकते हो और 3 की पावर वैसे जीपी रख के भी ऐड कर सकते हो. 729 2187 और 6. So sum of GP is A r to the power n minus 1 upon r minus 1. So first term is 3. 3 to the power n, there are 8 terms, minus 1 upon 3 minus 1, that is 2. So 3 by 2 of 3 to the power 8. 3 to the power 8 is 6561. So 6560. तो ये बन जाएगा 328 3280, that is 9 6. ये तो कुछ और ही नंबर दिख रहा है, 1229. 3 times its cost price, that is 3 times the selling price of this. Okay, so that comes as 3280 into 9, 340 97 9840. 9840 by 8 will be equal to 12 123. Uh, 122000 will be the one, because 976 का profit बन रहा है, so 122. And building blocks can be joined together. Pictures of individual blocks is packaged along with the box. Total number of such pictures is 65,000. What is the value of n? So 2 to the power n minus 1 होना चाहिए, ठीक है. Every possible model. So 2 to the power n minus 1, that is equal to 65536. So 1000 is 10 की power 2 की power 2 to the power 16 minus 1 हो जाएगा ये. Chris and Donald, Chris CD, and have annual salaries of 12 and 18. So C has 12, D has 18, 20% and 10%. What is the least number of years after Chris' salary will be greater than David's salary? Okay, so in this case, we will try with 5. Okay, so we will try to put 5. ये मतलब ऐसे थोड़ा सा tricky question होता है. So 5, if we put, then it will be 1 year, that will be 1.2 times, 1.44 times. 1 year 1.1. 2 years will be 1.21, 1.33, 1.46, 1.6. 5 times 1.6 हो जाएगा 1.72, 1.73, 1.73 into 2.05, 1.2 times is, okay, so roughly around 5 years आ रहा है approximation से. So 5 years later, like it will be around 30. So it could be 6 also, not exact, but yeah. And like if you have time, then probably you can solve it easily. What is the selling price ratio of two quantities mixed is 3:4. Cost price of first
So we do not know from first. Obviously, this is a very simple. Both statements together are sufficient because from both we will get the cost price of the mixture. Okay, because first में second वाले की cost नहीं है, second में first वाले की cost नहीं है. Okay, so it says employee salary bonus as a percent of salary, marketing, okay, expense per year of a new startup company. So employee salary इतनी है, bonus percent of salary, तो इतना bonus जाएगा plus rent, marketing, secondary expenses percent of total expenses. ठीक है, total expenses 2010 में पूछे तो 20,000 is salary and 6% that will be bonus, so 1% will be 200, so 1200 will be bonus, so 212, 20,000 plus 1200. Okay, that is this 3800 is your marketing expense, and then we have marketing rent expense 3800, marketing expenses 15,000. So we have 5,000, 25, 40,000 is our expense. Secondary expenses 10,000. Okay, so total expense will be primary expenses percent of total expense. Okay, sorry. So primary is 40. So total का 20%. Yeah, so total will be $50,000. In which year was the combined primary expenses the same as previous year? Okay, so primary expense combined previous year के same case में हो सकते हैं. So it looks like 2001 and 12. Okay, so answer will be 2012 because देखो primary expense almost similar लग रहे हैं. 11 and 12 में employee salary है. Like we are not calculating actually. Maybe true, maybe incorrect, but sometimes you have to take this call. ठीक है, क्योंकि मुझे ये सारे almost similar लग रहे हैं. थोड़ा सा ये increase है. ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज दिख रहा है और मे बी 2014 ऑल्सो वुड बी द करेक्ट वन. तो अगर 5% ले लें 1%, सो 300 का डिफरेंस आना चाहिए और 700, सो 2014 सही होगा क्योंकि ये 1% का डिफरेंस है. ठीक है, तो 300 का डिफरेंस आ गया और 700 का इसमें 1000 का इसमें डिफरेंस आ गया. तो मार्केटिंग अच्छा नहीं नहीं एनीवे सॉरी 2014 में ज्यादा 12 आई विल गो विद. एवरेज प्राइमरी एक्सपेंस इनकर्ड पर ईयर. ठीक है, एवरेज प्राइमरी एक्सपेंस कैलकुलेशन बेस्ड है, so we will just mark randomly. Okay, because not worth calculating. Which of the following is closest to the percentage change in total expense from 2011 to 2012? तो ये कर सकते हैं हम. ठीक है, 2011 और 12 का निकाल सकते हैं. 2011 24,000 is the expense and that will be 1200 will be your bonus, then 4300, then we will have 15,500. So that is 240, 240, 55, that is 210, 450, 450, 75. So 60,000 is the secondary expense. Total expense is 60,000 in 2011 and 2012 में निकालना है. 2012 25,000 and 4% is 1,000, so 26,000. 26,000 plus 19, 26 plus 19 is 45,000 is the expense. 45,000 expense है और ये है आपका 5/6, so 1/6 is 52,500. 5 parts, sorry, 54,000. So there is a change of 10%. So 60 and 54, 10% will be change. Okay, now this is another DI, okay, which says that the table shows the price per share of 5 companies in the year 2012 and go through the given table. So it says Mr. X bought 60 shares of company C and 40 shares of D in April and sold these 100 shares in the month of December, closest to his profit percentage. Okay. So 6 of share C. So C into 6 will be 120, 130, 200. Okay, and 4 of the company D. So we are doing 4, like instead of making 440, we'll take 4. So 2200 is 13200 and 4 times is 1556. That is, we will round off the values, okay, because 1500 into 4 is 6000, 6200. So 19400 is roughly his cost,
and he sold them in, he's purchasing in, sorry, April he purchased. I made a mistake in calculation. 6 is 144 to 145 I will take, and 1400 into 4 is 56. So 200 and 100s, and he sold them in the month of December. So 29 into 6 is 174. 175 I will take, and 11 into 4 is 44, 46. That will be equal to 221. So 20, so that will be close to 10%, very close to 10%, 9.7% I'll go with. Absolute simply monthly change. Okay, so annual change rate is this. Monthly changes, simply monthly change the maximum. Okay, now it is tough to check it. Okay, and if you keep checking each of the values, like एक September October में difference दिख रहा है मुझे A में, so I'll go with 90%. काफी change हो गया. So that's the most significant change I could see in the table. So I'll mark that. What is the average price per month of share E as a percentage of the average price C in 2012? Now E and C के comparison में पूछा है average price per month of share E, average price month of share C. ठीक है, तो एक rough value देखते हैं. Right now, if you see, E is around 700, 600. ठीक है, 700, 600, 500. So we will go with like somewhere 700. So E को roughly 700 मान लेते हैं. Or C is around 2000, right? So 700 and this is 2000 plus. So 700 by 2000, roughly 35%. So उसके आसपास की जो value है 30% will be the answer. Okay, we are not even calculating the exact answer. Which of the following months reported the maximum percentage increase in the price of share D? Okay, so we need to see share D में कब से सबसे ज़्यादा percentage increase पूछा है. ठीक है, so Feb, May, June, July, September. Feb is somewhere around less than 10%. May 1500, so more than 10%. June, July. June there is a decrease. July not much increase, 8%, and September we have, so it is between May and September. ठीक है, May में आपका 150 का increase हुआ, September में भी 150 का increase हुआ. Base is less, नहीं, May में 150 increase हुआ, but 1397 से 159. So base is less in August, so September will have the highest percentage increase. ठीक है, so without calculating we can get it. So once we do the solutions, we will discuss this in detail कि कैसे हमने सही आंसर किया. ठीक है, कुछ of course randomly fluke मारा है. This month his 5 credit card bills are in this ratio and the total bill is 183,525. Minimum payment blue. How much does he pay towards the second credit card? Okay, so it says that his total bill is in the ratio 14 plus 11, that is 25. Okay, so 183 ka, and it is saying that second credit card, right? So second credit card is 4 by 25 of this, or we can say 1/6 roughly le lo. 1/6 will be approximately 1/6 of 183,000 is 30,000. 30,000 का 500, 1,500 close to वो pay करेगा. That is, if you want to calculate exact, you can calculate exact also, and you will find 1 by 20 of this. Okay, so अगर आप actually divide करोगे तो आपका सही आंसर पे आएगा 25 into 7, 175, 82, 3, 7, 733. 733 into 733 by 5. 733 by 5 is 1466. 1466 के आसपास हो रहा है. So we will choose this as the answer. Okay, so we are given a graph. It says 25,000 families were asked about the usage of technology. Okay, and it says that all children 3 to 18 in their family, there were 45,000 children in this age group. The children also use technology were asked. There are 25,000 families and 45,000 children in this age group, and they were asked that family owns child users. Okay,
And child use frequency is also given, daily, often, less this. Owned by exactly 11,500 families. So 11,500 we will divide by 25,000. 115 by 25, that gives us, multiply by 4, 46. So 46% is tablet. So they are talking about the tablet. It is saying how many children 3 to 18 years use it. So 34%. So 34 into 25, which is 800, 8500. Good question related to the calculation hacks. Smartphone weekly, number of e-reader weekly. Yes, smartphone first we will find smartphone, 43 into 25, and e-reader is 25 into 11. That is 275, 800 or 1075. स्मार्टफोन में वीकली निकालना है और स्मार्टफोन में वीकली इज 29%. So we need to find 29% of this. And e-reader, is 55%. Okay, so a bit of calculation is needed over here. 30% is somewhere around 29% of 1075. So not calculating exact value. 30 into 11 is 330, so maybe 320. Right, 3200, 25 into 75 into 55. 55 is maybe around 1500. $1,700, I'm getting the difference, not in the options. Okay, so just make 17 into 5 could be the answer. Just make it. Which device is used daily by 11,934 children who are aged 3 to 18? 11,934 children. Okay, so what I will do in this case is, it is saying daily. So I may go with 52% is 13,000. Laptop is 13,000, and that also daily is this. Sorry, there are 45,000 children. I made a mistake in the previous question. I took 25,000 as the children. So we'll start with laptop. Laptop is 45,000 and 52%. That is somewhere around 23,000. 23,000, 50% use. So 11, that would be laptop only, I guess. Very likely put that it will be laptop. 51 से भी divide कर देते हैं 11934. Lord, let's divide by 17. 17, 7 is 119. Yes, so it makes logical sense to go with laptop. So this is a draining question, right? It is draining energy. So thankfully we are on question number 18. Now we can solve questions with good pace. The ratio of total number of children who use laptop less often to the total number of children who use e-reader laptop less often. So laptop is 52%, and in that less often is 6%, and to e-reader is 11%, and less often in e-reader is
13%. So 4 times, that is 24:11. Okay, so calculation intensive set this was. Okay, so we need to find 2 raised to the power 2 raised to the power log. इसका standard answer होता है, that is 2. Okay, so that you will नहीं 2 से ज़्यादा होना चाहिए, because log 2 is some value and to infinity. Okay, so इसको ऐसे कर सकते हैं, let y is equal to log 2 raised to the power log 2 2 raised to the power log 2 to the power log 2 and so on. If you take log y is equal to log 2 y. I think that will be 4. Are the integers a and b co-primes? Both numbers a and b are squares of two successive even numbers. ठीक है, तो first से पता चल जाएगा co-prime नहीं है, because when you have two successive even numbers, they will be multiples of 4. Okay, so you take any two even numbers, so co-prime नहीं होंगे. ठीक है, a and b are distinct primes. If two numbers are distinct primes, then definitely they are co-primes, because uh, prime numbers are always co-primes amongst themselves. So each alone statement alone is sufficient. This was an easy picking. There are 6 different colored ties and 6 different colored shirts. At least one tie and one shirt be selected. Okay, so for each, uh, like there are 6 ties and 6 colored shirts. At least one tie and one shirt be selected. Okay, so we have to select one tie out of. So we have 7 possible ways of selections, right? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 7 possible ways of selection in which we may or we may not select anything. Okay, so or rather we would say that so for every tie we have two choices, whether to select or whether not to select. Okay, so six ties we will have 64 ways, right? And we need to select at least one of the ties. So there will be one way in which no tie will be selected. So 63 ways in which at least one tie will be selected. Same for shirts. So 63 square will be the answer. That will be 3969. ठीक है, इसको जब solution करेंगे then we will do it in detail. So that will be 3969 63 square. A school is organizing. अच्छा, अगर आप NMAT की प्रिपरेशन कर रहे हो तो probability और permutation combination अच्छे से कर लेना. You are seeing that lot of questions being asked from this topic. So typical NMAT type का पेपर लग रहा है जो actual में आता है. School is organizing charity event and needs student volunteers from grade 9 10. 7 3 volunteers, 5 students have to be picked, and at least one grade 9. So 1 minus no from grade 9. 1 minus none from grade 9 means we are selecting uh, 8. Remaining from 8 we are selecting 3. 5 we are selecting, because we have to select 5 people. Upon total ways of selections is 15C5. So we will have 1 minus 8C5 is 8C3, which is 56. 15 into 120. So मैं calculation कर लेता हूँ, आपको like when we discuss the solutions वहाँ पे discuss करेंगे. Is 8 3 times 1 minus 8 by 39, 429 आ रहा है denominator. 39 into 11 429. So 421 by 429 हमारा आंसर आ रहा है. So that is option E. So answer is basically 1 minus 8C5 by 15C5.
ठीक है. So let's move to the next question. So we have enough time left, so probably बाकी के क्वेश्चन में ऐसे वैसे सॉल्व करके दिखाता हूँ. 5 pilots, 7 engineers, rest general rescue workers. 10 members from this team are to be chosen. That consists of 4 pilots, 6 engineers, and the rest general rescue workers. So 10 तो वैसे ही already बन गए. जनरल रेस्क्यू वर्कर तो सेलेक्ट ही नहीं होंगे ना. 10 people they are choosing, 4 pilots and 6 engineers. So there is some issue with this question because it is saying 10 pilots, 10 की तो already team select हो गई है. Let's just mark randomly and move. Monthly income of A and B is 4025, so total is 8050. So we need to find their annual income, right? So A plus H is 8050, adding this, and H plus C is equal to 12500. A plus C is 10400. We need to find H. So let us all add all three. So 2 times of A plus H plus C. So let's solve like, क्योंकि हमारे पास काफी टाइम है, 12 ही क्वेश्चन करना है, that we will be able to do. Okay. So first is saying that first statement से A plus H आ जाएगा, right? A plus H will be 8050. Then from second we will get H plus C, that will be equal to 12500, and third will be A plus C, which will be equal to 10400, right? So when we add these, we will get 2 times of A, 2 times of H, and 2 times of C. So 2 times of A plus H plus C is equal to, this is 105, 129, 229, 229 plus 80 is 30950. And when we divide by 2, so we will get A plus H plus C is equal to 15475. And then we have, we need to find the salary of Hemant. So Hemant we need to find. So we will subtract A plus C from it. So A plus C, if we subtract, that is 105. So 104 if you subtract, that will be 50, 50 and 75, 5075 in the cell. A warehouse stores 345 liter HCl. So this is a HCF based question. 345 liter HCl, 120 liter H2SO4, 225 liter of NH3. So इसका HCF निकाल देंगे. Biggest size of cars, that will be 15 liters. 15 will be the HCF of these. For a certain project, Nick has drawn exactly n concentric circles. Radius of innermost is r. Radius of each circle is r more than the circle just below it. Sum of radius of. Okay. So this is a question based on arithmetic progressions. Okay. So it says that he has to make concentric circles. Sum of radius of n minus 1 and n minus 2 is equal to 78, or n minus 1, n minus 2, n minus 3 का सम आ रहा है 114. Right. So n minus 3 वाले का हो गया 36. ठीक है. So n plus radius of innermost circle is r, and each of the circle is r more than the circle just below it. What is r? Okay, so that means they are in arithmetic progression. So arithmetic progression by r below it. So when we take three terms, the average is the central term. So n minus 1, n वाले का 42 होगा. ठीक है. So that means basically he has 21 circles and each of them is at 2. So n plus 1 by 2. N circle radius is 42. That means this is the 21st circle. So हमें निकालना है 11th circle का. N plus 1 by 2, that is 11th. That will be 22. Central circle का निकालना. Series follows a certain pattern: 392, 288,
then we have 200, 200, 128 and 72. तो difference देख लेते हैं. This is 104, this difference is 88, this is 72, this is 56. So 16 कम होते जा रहा है. Next will be 40, this will be 32. Okay, इस बार मुझे क्वांट में थोड़े इजी क्वेश्चन लग रहा है बिकॉज आई हैव इनफ टाइम, लाइक 22 मिनट्स और 7 क्वेश्चन ही बचे हैं. ओके, सो आई एम नाउ थिंकिंग कि अगर मैंने DI 10 से कर लिया होता तो वो भी सही हो जाते हैं. Subtract from the selling price and product from the selling price of the product and divide the result by 10. The commission will be 0.5 times the sum of the resulting quotient and 1 if a person receives a commission of. Okay, so it says that 0.1 from the selling price so we need to do in the reverse manner. So 0.01 from the selling price of the product and divide the result by. So 0.1 is negligible. Okay, you can say that it is almost equal to the selling price only. So selling price 1 plus selling price 2 को इसने 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है, और फिर उसको कर दिया, जो क्वोशिएंट आया उसको 0.5 टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया एंड 1 दैट इज इक्वल टू 6.5. ठीक है, तो ये आ गया आपका 5.5 और ये आ गया आपका 55/110 के आसपास आना चाहिए रफली. 110 के आसपास कौन सा टोटल बन रहा है? 44 and 68. So that makes sense. उससे 0.01 जो सब्ट्रैक्ट करना था 1 from selling price, that would be the case. तो थोड़ा सा सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, then we will do the calculation. So 0.01 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए. तो कुछ तो गड़बड़ है इसमें. क्वेश्चन में हर बार सही नहीं होता, but we'll see later. Anna in 10 days, Bharat in 15 days. Easy लग रहा है. Okay, so 10 and 15 they will complete in 6 days. मतलब ये तो आपको ऐसे याद हो जाना चाहिए. ठीक है, 10 की एफिशिएंसी क्या होती है? 10% और 15 की होती है 6.66%. तो टोटल कर लोगे 16.66%, दैट इज 1/6. So 6 days they will take. LCM से करोगे, टोटल वर्क इज इक्वल टू 30 यूनिट्स. A can do 3 units, B can do 2 units, total 5 units. 30/5, 6 days. तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. आई डोंट नो, इस बार बहुत इजी क्वेश्चंस दिख रहे हैं इसमें. इंटरेस्टिंग. A man won 150,000 in lottery scheme after giving 30% tax to the government. He invested fixed deposit 10% per annum compounded annually. 20% of tax on the interest earned every year. What was his money left in the account after 3 years? So let's do this. So after 30% tax reduction, his money is 105,000. Then he invested at the rate of 10% per annum. ठीक है, 3 years के लिए इन्वेस्ट किया. तो 3 years के लिए he will make like every year basically he will generate 10% compound interest. 10% इंटरेस्ट बनेगा, उस पर भी 2% उसको इंटरेस्ट देना. सो इफेक्टिवली उसका 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा. 10% इंटरेस्ट बना, ठीक है, फॉरगेट दिस नंबर. तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा. ठीक है, पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में से 20% टैक्स देना है. ठीक है, तो 10% इसका -2% हो जाएगा, 20% ऑफ इंटरेस्ट. तो इफेक्टिवली 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा. 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट बनेगा. सो 8 into 24, आई गेस दिस वुड बी द आंसर. ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि क्यों आंसर आएगा. ठीक है, सो दैट विल बी 105,000 into 108/100 का क्यूब होगा. ठीक है, अब मुझे क्यूब नहीं निकालना है. व्हाट आई विल डू इज बेसिकली दिस इज 105 into then say 10.8 होल क्यूब, बिकॉज 3 0 कट जाएंगे यहाँ से. ठीक है, 10.80 क्यूब विल बी 3 places after decimal and 0.5 will remove one of the decimal places. तो रफली ये आंसर आएगा. अगर वैसे कैलकुलेशन करते हो
तो 3 years में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 24% होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा उससे बड़ा ले लो, लाइक 25%, 26% या 27% आप इंटरेस्ट ले लो। तो 26% इसका कितना बनेगा, रफली अराउंड, सो क्लोज टू दिस वैल्यू विल बी द आंसर। ओके, डेसिमल में आंसर आएगा और क्लोज टू दिस इज द आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1। एक्स क्यूब अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 निकालना है, right? And we have x square upon y square is 1 by 4. So x square and x upon y can be 1 by 2 minus 1 by 2. And second says x upon y is 1 by 2. So x upon y 1 by 2 आ जाएगा, but x और y की distinct values नहीं आएंगी, because we need to find x cube upon y square plus 1. Because x upon y, अगर पहले से x upon y is 1 by 2 or minus 1 by 2, right? From second we get x upon y is equal to 1 by 2. That is fine. But x upon y 1 by 2 है, तो x 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, accordingly y हो सकता है 2, 4, 6 or anything are not sufficient. Anshuman bought 2 articles from a sale and sold them to his friend Ankit. Did Anshuman make a profit or loss? Anshuman sold both the articles at same price. From this we cannot tell. Of the 2 articles sold, p% of 1 profit, देखो सेकंड से नहीं पता चलेगा इंडिविजुअली, बिकॉज p% प्रॉफिट सेकंड ऑन p% लॉस, ये नहीं पता चलेगा। बट अगर हम दोनों को कंबाइन करेंगे दैट विल बी सफिशिएंट। आई विल टेल यू हाउ। इफ अ पर्सन इज सेलिंग, लाइक sold both articles at same price, if you sell one thing at a profit of p% and another at a loss of p%, ठीक है, तो एक काम करते हैं 10% लेके देखते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है कि आप एक को प्रॉफिट ऑफ 10% पे बेच रहे हो, 110% पे बेच रहे हो, दूसरा वाला जो लॉस वाला है आप 90% पे बेच रहे हो, ठीक है। एंड दैट शुड बी सेम। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, लेट अस से 99। तो सेलिंग प्राइस ले लेते हैं 99, सो दैट पहले का जो कॉस्ट प्राइस है उसका कॉस्ट प्राइस होगा 90, तो आप 110% पे बेच रहे हो, और दूसरे वाले जो लॉस पे बेच रहे हो उसका हो जाएगा 110। अब देखो 200 आपका कॉस्ट आया और सेलिंग प्राइस आपका आया 198, तो आपका लॉस होगा। so you will always have loss. Remember, if two things are sold at same selling price, one is at p% profit, another is p% loss, हमेशा लॉस होगा, ठीक है। एक और केस ले लेते हैं, 20% ले लेते हैं। तो अगर सपोज आप 20% प्रॉफिट और लॉस पे बेच रहे हो, तो एक 120% पे बेच रहे होगे, एक 80% पे बेच रहे होगे, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आ जाता है, 12 8 का 48, ठीक है। 48 12 और 8 का आ जाएगा आपका एलसीएम 24 एलसीएम आ जाएगा, राइट। तो अगर आप प्राइस 25 ले लो, ठीक है, सेलिंग प्राइस तो सेलिंग प्राइस आपने 25 ले लिया, और नहीं सॉरी 24 आपने सेलिंग प्राइस लिया। अगर एक 20% प्रॉफिट पे बेच रहे हो तो उसकी कॉस्ट 20 होगी, और जो 80% पे बेच रहे हो तो उसकी कॉस्ट 30 होगी, ठीक है। सो दिस इज कॉस्ट 1 एंड कॉस्ट 2, दिस इज द सेम सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस टोटल आपका 48 हो गया, कॉस्ट आपकी 50 हो गई, तो लॉस ही होगा इसमें। so this is a sure shot loss case. So when we know both statements, we will always get a loss. Which of the following exactly divides x, where x is the sum of first 15 prime numbers? So easy question है, just that you have to write all the first 15 prime numbers. तो first 15 prime numbers आप लिख लो 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, और 17, 19, 50 तक होते हैं बेसिकली, 23, 29, 31, 37। टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, बट हाँ करने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि कौन से नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हम इनको ऐड कैसे करते हैं, ठीक है, ऐड करने की भी टेक्निक बताता हूँ। जो जो नंबर ऐड करके
लास्ट में 0 देख रहे हैं, जैसे ये दोनों 90 दे रहे हैं, ठीक है, तो इनको साथ में ऐड कर लो। ये दोनों 60 दे रहे हैं, इनको ऐड कर लो, ठीक है, कट करते रहो। और फिर कर लेते हैं हम 2 3 5 को ऐड कर लेते हैं, साथ में 10 बना दिया। 17 और 13 को कर लेते हैं, साथ में इनने मिलके 30 बना दिया, क्योंकि अब ऐड करना इजी होगा। 19 और 11 को ऐड कर लो, 30 बन गया। 723 को ऐड कर लो, 30 बन गया। और 37 41 इज 78। ठीक है, तो इस तरह से इजीली ऐड हो जाते हैं रादर देन एडिंग मैनुअली। अब क्या हो गया, 1 + 3 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 6 16, 16 + 9 is 25, so 250 + 78, तो इतना बन गया आपका 328। 328 को अगर आप इनमें से देखो, अगर आप देखोगे 41 × 8 बन रहा है, तो आंसर आपका आ गया 40। ठीक है, क्वेश्चन था, टाइम कंज्यूमिंग था, बट डेफिनेटली आप कर सकते हो क्योंकि आपको प्राइम नंबर्स पता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काफी जल्दी हो गया क्वांट का पेपर, लाइक मैं तो अभी स्लो मोशन में कर रहा हूँ, समझा समझा के। फास्ट कर रहा था तो मे बी 10 मिनट से ज्यादा इजीली बच जाते। तो इजी पेपर लगा मुझे क्वांट का। लास्ट ईयर अ ग्रुप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हैड 220 मेंबर्स. X boys and girls joined the group and no one left the group. As a consequence, the number of boys in the group increased by 15% over the last year and the number of girls increased by 12% over the last year. Okay? So there were some boys, there were some girls. Boys का number कितना बढ़ा? 15%. Okay? और girls में 12% increase आ गया. So it says there are 250 boys and girls. So पहले 220 थे, अब total 250 हो गया. Right? How many girls are in this group this year? अब देखो, इस क्वेश्चन को आप इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे। आई टेल यू द डिफरेंट वेज। ठीक है, एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से करते हैं, जो है कि गर्ल्स का नंबर 12% इंक्रीज हो गया, तो 112 पॉसिबल है। ऐसे क्वेश्चंस को रिवर्स सोच के करना है। ठीक है, तो गर्ल्स इंक्रीज बाय 12%, तो गर्ल्स को 112 मान लो। तो बॉयज कितने हो जाएंगे? बॉयज हो जाएंगे 138 दिस ईयर। अब लास्ट ईयर निकाल दो, लास्ट ईयर गर्ल्स 100 हो जाएंगी, बॉयज को 15% लेस कर दो, तो बेसिकली 138 इज 115%. So you will find this. This is 6/5, or which is 120. Last year 220 आ रहा है और ये 250 आ रहा है, which makes sense. Answer is 112. ये रिवर्स वे में किया। और इसको दूसरा तरीका क्या होता है, सपोज ये क्वेश्चन आपका कैट में पूछ रहा है, ठीक है, कैट में जिसमें ऑप्शन नहीं दिए, तो उसको कैसे करेंगे? तो बॉयज में कितना इंक्रीज आ गया? 15%, गर्ल्स में आ गया 12%। ठीक है, जो दूसरा जो प्रॉपर वे है, ये तो हमने रिवर्स किया, दैट इज अ टॉपर्स वे, राइट, एंड दिस इज द प्रॉपर वे। सो दो तरीके होते हैं, प्रॉपर और टॉपर। ठीक है, प्रॉपर भी आना चाहिए, टॉपर भी आना चाहिए। टॉप करना है, कुछ केसेस में आपको टॉपर्स मेथड लगाना पड़ता है। प्रॉपर मेथड कैसे करेंगे? नाउ सी व्हाट इज द ओवरऑल इंक्रीज। ओवरऑल इंक्रीज इज 30 आउट ऑफ 220, बिकॉज पहले पहले कितना था? 220 था, 250 हो गया, राइट। सो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज वी नीड टू कैलकुलेट। तो 3/22 दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 50 एंड 11, 150/11। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे? 11 11 डिनोमिनेटर ले लो, दैट विल बी 165/11 एंड 132/11। ठीक है, 11 रन क्रॉस कर दो, सो दिस इज 18 एंड दिस इज 50। तो 6 से रेशियो 5 में हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी 15 आ रहा है और 18 आ रहा है, तो 6 से रेशियो 5। 6:5 मतलब बॉयज थे आपके पास 120 और गर्ल्स थी आपके पास 100। ठीक है, इसमें 12% इंक्रीज कर दिया, तो दैट विल गिव अस 112। तो 112 ऐसे आ गया। ठीक है, अगर एनमैट का क्वेश्चन तो डेफिनेटली आप ऑप्शन से जाओगे कि 12% इंक्रीज दिख रहा है, 112 इज द ओनली नंबर विच लुक्स सुटेबल हियर। ठीक है, अगर आप देखो 100 तो नहीं लगेगा, 115 को 112 से डिवाइड करोगे, you will get something in decimals. Okay, so let's do the next one. It says that Sam uses 3 raw materials, R1, R2, R3. So anyway, we will solve all the questions properly. ठीक है, तो जो मैंने ऐसे शॉर्ट में कर दिए वो भी मैं बताऊंगा डिटेल में ट्रिक। To manufacture product A, sells product A at the price of dollar SP, making a profit of 30. The raw material
Okay, so he says there are three products A, B, C. Okay, R1, R2, R3. There are three products. So R1 constitutes, it says R1, they are 15, 15 and 20% of the cost. तो टोटल 100 की कॉस्ट है. अब क्या हो रहा है कि R1 और R2 की कॉस्ट 20% डिक्रीज हो गई. इसका 20% कितना हो जाएगा? 3. इसका भी 20% 3 हो जाएगा. इसका 50% इंक्रीज कर दो. 20% डिक्रीज हो गया, 20% डिक्रीज हो गया, 50% इंक्रीज. तो इसकी कॉस्ट कितनी बन जाएगी? 12. इसकी भी बन जाएगी 12 एंड दिस विल बी 30. अब देखो बाकी चीजों की कॉस्ट उतनी रहेगी. ठीक है, तो रेस्ट कितनी थी? रेस्ट वाज, दिस इज 30, 50, रेस्ट इज 50, रेस्ट विल रिमेन 50 ओनली. तो अब कॉस्ट कितनी होगी? 104 हो गई. तो परसेंटेज प्रॉफिट सेम रखना है, 30% ही रखना है. तो कॉस्ट तो सेलिंग प्राइस से 4% इंक्रीज करना, बिकॉज कॉस्ट प्राइस 4% बढ़ गया, प्रॉफिट उतना ही रखना है. सो ही विल हैव टू इंक्रीज द सेलिंग प्राइस बाय 4%. जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड 50 वर्कशीट्स and they were among 6 students of class section A, 12 of B, 17 of C. 2 students of section A was equal to, okay, so थोड़ा सा से करना है, A, B, C. Number of students is 6, 12 and 17. Okay, so total कितने हो गए? 18 plus 17, 35. Number of worksheets received by 2 students of section A was received by, so 2 students of section A, that means 5:2 में आपका होगा. 2 students of section A, 5:2. So this is in 5 ratio, A ratio C is 5:2. So B ratio C is 3:2. मुझे कुछ क्वेश्चन गलत लग रहा है, but let's see. So A, B, C, that will be A, B, 5:3. नंबर ऑफ स्टूडेंट से कुछ गड़बड़ लग रहा है. लाइक होते, मैंने इसके क्वेश्चन देखे, काफी गड़बड़ भी रहते हैं. तो 5:3:2 आना चाहिए. हंड्रेड आना चाहिए. टोटल आपका आ रहा है 100, 30, 36, 34. कभी कभी क्वेश्चन बनाने में गलती कर देते हैं. तो दैट विल बी 100 शीट्स. 5:3:2. आंसर विल बी 2. सी का पूछा है ना, तो दैट शुड बी 2. तो इट शुड बी 100 और या तो 150 होगा. कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे. 50 तो पॉसिबल नहीं है. ये देखो 50 पॉसिबल होता तो ये टोटल स्टूडेंट्स इटसेल्फ इज 35 और 5:2 में नहीं बन सकता, बिकॉज नंबर ऑफ शीट्स हैज टू बी either it will be 150. Okay, so that will be taken accordingly. Okay, so I think we'll mark this as the answer and then submit it. Right, so this marks the end of the paper. Can you guess the score? कितना score बना होगा? So can you guess what will be the score in this? I guess 270 से 280 के बीच में बनना चाहिए. Not sure of it. ठीक है, बट क्वांट आई फाउंड वाज इजी. इतनी इजी नहीं आती टिपिकली. लास्ट ईयर तो नहीं थी. एनीवे व्हेन आई टेक द एग्जामिनेशन दैट आई गेट टू नो कि एक्चुअल में कितनी आ रही है. क्वांट का लेवल इससे थोड़ा डिफिकल्ट होता है एक्चुअल एग्जाम में. LR was at par. That also I found. English I found challenging. ठीक है, द काइंड ऑफ एनालॉजी वर्ड्स आई गेस एक दो छोड़ के बाकी तो वर्ड ही समझ में नहीं आ रहे थे. LR was fine. उसमें भी मुझे थोड़ा शॉर्ट लगा last time के comparison में, because the passage based questions were shorter. Let us see and see how it fares. So this is how you take NMAT and then you get the score. Okay, 245. So it looks quite low, which I don't think कुछ तो गड़बड़ लग रहा है स्कोर कार्ड में. 245 looks a quite low score. Maybe they have scaled down heavily, because quant में I got 86. Let us see the
ओके सो इट वाज इजी, स्किप नहीं करने का ऑप्शन है। ठीक है, वेरी इजी। ओके सो लेट्स सी दिस कि कुछ तो स्कोर इसमें स्केलिंग सही नहीं हुई है, कुछ तो गड़बड़ लगी है। हाईएस्ट स्कोर इज 298। ओके so got some incorrect, 2 3 4 6 7 9 9 incorrect हो गया। Okay then it makes sense, maybe deductions only 3 correct। Okay so not a good performance this time, 14 plus 5 is 19, 22 correct only। Okay so then it makes sense, like did not perform well in the test। English so definitely lot of questions, reading comprehension only one correct। We'll have to see। Okay so performance was not good, like especially 30 21 incorrect, so then you can see these solutions also, but surprising scores are scaled in some random manner। See quant I got 27 correct, yeah, but still the score like in English the score is 80 even after getting very few questions correct। So scoring इसकी किसी की समझ में नहीं आती। Quant I don't know that how it came, then you can see the questions also when you go to the रिव्यू थिंग, यू कैन चेक द क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको ये सारे दिख जाते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपका करेक्ट हुआ, कौन सा इनकरेक्ट गया, बट अनफॉर्चुनेटली आपको क्वेश्चन वाइज नहीं दिखता है, मतलब सोल्यूशन नहीं होता है इनका। ओके सो दिस इज हाउ वी कैन चेक दैट। आई डोंट थिंक दे गिव the right answer also। Okay so that puzzle of course was incorrect, okay, mostly so this was incorrect, so B should have been the answer then। Okay अच्छा selling price पूछा था, silly mistake here, same DC question। This was a guess, this was also a guess, some of the questions were guess, and so this was okay, so anyway we'll discuss these questions when we create the solutions, okay, so then we will discuss all in detail, okay। So the thing was like you need to not to spend too much time on a particular question, okay, and yeah so not a great attempt I would say from my standard, I would have expected somewhere 270 to 280, but that's fine, it happens, okay। So that should be a lesson for you also, that you need to be well prepared for the day of the examination, okay। So we will be discussing these questions soon, so in this we will discuss uh, all the questions and the best way to solve those questions, and like if you are looking for NMAT mock tests, we have NMAT mocks on the same kind of interface and difficulty level, which is at par with what was asked in NMAT in the last few years, so you can check them out, and we have a free mock also, so at least take the free mock of GMAT before you attempt the examination। पेड मॉक्स भी आप दे सकते हो, इसका रीटेक ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, right, you can take that also, and there are 2 paid mocks, if you wish to go for them you can take those, because these marking scheme is as what NMAT follows, ठीक है। NMAT की बहुत weird सी marking scheme होती है, जैसे आपने देखा कि बहुत कम क्वेश्चन करेक्ट होने पे भी
अलग स्कोर आता है, राइट, एंड क्वांट पे बहुत ज्यादा सही होने पे भी कम स्कोर है रिलेटिवली. So that was this attempt. So hope you found this useful, and we will soon be discussing the questions that were tested in this test, and we'll discuss the solutions and see how they could be solved in the examination. So thank you all for watching this, and have a great day ahead. Goodbye.